here we go. The Kamal Ki team behind this movie, and we have a question for you, like each one of you. Sabse pehle for you, Maddie Bhai, that's what I'm gonna call you because that's what we lovingly call you. So please tell us, like, is this the most hatke role that you've done till date? Because it's intense, it's deceptive. There is so much, और इतनी layers हैं. Please tell us. वेरी गुड आफ्टरनून लेडीज एंड जेंटलमैन. यार मैं जो भी रूल करता हूँ वो हट के ही रहता है यार, ऐसा थोड़ी है. He got me here. पर सच तो ये है कि this is a very different role for me because the beauty of this story is that I can't tell you anything. क्योंकि अगर मैं कुछ भी कह दूँ आपसे तो फिर फिल्म का मज़ा निकल जाएगा. पर मैंने ऐसे रोल कभी नहीं किया है. और मैं ये कहना चाहता हूँ कि it was really a great pleasure to shoot this film. I'll tell you why. Because we shot it in the middle of COVID and a time when all the precautions had to be taken. And for me, it was a great relief to come back on set and do such an exciting story and work with Cookie because he's efficiency and creativity personified. Wow. He's very efficient, he's very creative, knows exactly what he wants. And for an actor, I mean it. And for actors at that time when we were looking for some sort of stability during the COVID era, कि यार हम कब शूट करेंगे, कैसा शूटिंग होगा, हमको कोविड हो जाएगा, नहीं होगा, हमारा शूटिंग डिले हो जाएगा, ये सब डर होते थे उस वक्त. कुकी जैसे एक कैप्टन हमारे साथ होना मतलब बहुत ही बड़ी बात थी. एंड ऑफ कोर्स टी सीरीज व्हिच टुक द एंटायर द क्रेडिट ऑफ कीपिंग इनटू अ सेफ एनवायरनमेंट फॉर अस टू शूट एंड help us creatively also act because डर के हम शूटिंग थोड़ी कर सकते हैं. धोखा नाम है पिक्चर, डर थोड़ी है. पर ऐसे माहौल में एक अच्छा सा एनवायरनमेंट क्रिएट करना और फिर हम सब किरदार में घुसकर ये फिल्म को हम कर पाए और ऑन टाइम ऑन बजट. इट्स जस्ट एन ऑनर टू बी पार्ट ऑफ दिस फिल्म. हम अपने किरदार के बारे में इसलिए नहीं बता पाएंगे, आई डोंट थिंक कोई भी बता पाएगा क्योंकि फिल्म का नाम ही धोखा है. अगर हम जो भी अभी बोलेंगे सब झूठ ही बोलेंगे, झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलेंगे. Basically, after doing a rocketry, experiencing the rocketry journey of rocketry, is it natural for your next film for you to have this dhoka around the corner attitude? Yeah, it's very important. It's not a light question actually. It's a very important question. वो थक गया मैं नंबी नारायण बन के अभी. So वो 6 साल से मैं उसको लेके घूम रहा था. तो डायरेक्ट करने के बाद, लिखने के बाद एंड प्रोड्यूस करने के बाद यू वांट टू कम ऑन टू द सेट एंड वो जो आपके इंस्टिंक्ट्स है ना कि आप डायरेक्टर को बताओ कि भाई ऐसा शॉट ले लो, मैंने पहले ले रखा है. वो सब जो गलतियां इंसान करते हैं वो सब अपने जहन से निकालना पड़ेगा एंड देन जस्ट वांट टू बी एन एक्टर एंड जस्ट वांट टू बी मोल्डेड बाय द डायरेक्टर. That relief that I can do that and actually submit myself to a director was something that I was very happy that I could do with Cookie. So for me, that cleansing was very important. My second question is obviously in the relevance of, without really exaggerating that, in context of remakes, recently like we had Laal Singh Chaddha and the thing which stays with me is there's a dialogue about malaria and, because now South and other regional content is releasing theatrically in Hindi belt and they are coming directly on OTT and obviously you represent, Pan India and what is your take in terms of, like as a filmmaker, would you now be tentative in, if you have to remake your own film in Hindi? Yeah, I don't remake my films anyways here. I think it's even they wanted me to do remake Three Idiots in Tamil, I didn't do it because वो मेरे लिए मुश्किल हो जाता है. As an actor, when I do a scene for the first time, it itself is very difficult to give it your life and soul. फिर उसको वापस recreate करना is impossible for me. So I don't think I'll do remakes of anybody's film, not even mine. Because the comparison happens, the whole fun of doing the film goes away. So I don't want to do remakes. I think right now everybody is skeptical about what to do because we're hoping that the content hits home somewhere and get the audience coming back to the theaters in a big way. And we're just keeping our fingers crossed on that. दिनों दिन बॉलीवुड की मूवी को लोग बायकॉट करते जा रहे हैं और साउथ की मूवी आगे बढ़ते जा रही है. तो इस पे आपका क्या कहना है? मुझे लगता है कि अगर अच्छी फिल्म आएगी और अगर पब्लिक को पसंद आएगी तो थिएटर में लोग ज़रूर आएंगे. हमको ऐसी चीज़ों का सहारा लेने की ज़रूरत नहीं है. जहाँ तक साउथ इंडियन फिल्म्स हैं मैं आपको स्पष्ट तरीके से बता दूं कि बाहुबली 1, बाहुबली 2, RRR, पुष्पा, KGF 1 और 2 ये फिल्में चली हैं जो हिंदी फिल्म के एक्टरों से ज़्यादा कमाई हैं. ये सिर्फ 6 फिल्में चली हैं. इससे हम पैटर्न नहीं कह सकते.
अच्छी फिल्में आएंगी तो ज़रूर चलेंगी और मुझे लगता है कि कोविड के बाद लोगों का पसंद चेंज हो चुका है, उनकी अवेयरनेस चेंज हो चुकी है, दुनिया भर के कंटेंट वो कंज्यूम कर रहे हैं, तो उनके लायक जब भी आप कंटेंट करोगे हम जीत जाएंगे। जितने भी फिल्म्स अभी आ रहे हैं मुझे लगता है कि उनको थोड़ा प्रोग्रेसिव होना पड़ेगा बस। जैसा कि आपने कुछ देर पहले कहा कि आप जो भी फिल्में करते हैं कमाल के होते हैं फिल्में, इसके पीछे एक ही वजह होती है कि आप एक फिल्म को ज़्यादा से ज़्यादा वक्त देते हैं सर। जैसा आप साल में 5-6 फिल्में नहीं करते हैं, एक फिल्म के पीछे बहुत टाइम देते हैं, और दूसरी तरफ आपके फैंस चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फिल्में करें। दोनों को बैलेंस करने के लिए क्या स्ट्रेटेजी अपनाते हैं आप? भाई साहब, मैंने कभी नहीं कहा कि मेरे सारी फिल्म कमाल के हैं, मैंने कहा कि मेरे रोल्स अलग हैं। मेरा फितरत मत बदल दीजिए। बट नहीं, आप जो कह रहे हो मैं उसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। मुझे लगता है कि सच तो ये है कि जैसे कि आप देख रहे हैं खुशहाली जी हैं, दर्शन साहब हैं, सबके 6 पैक 8 पैक तो हो जाते हैं यार, लेकिन आम आदमी आजकल 6-8 पैक लेके घूम रहा है। अगर आप डांस शो देखोगे तो आप देखोगे कि बच्चे जो डांस कर रहे हैं वो इतने कमाल के कर रहे हैं कि हम लोगों को डर लगता है कि हम अपने आप को स्टार्स कैसे बनाए थिएटर पे। तो उनसे आगे बढ़कर अपने आप को एस्पिरेशनल रखने के लिए स्क्रीन पे हमको बहुत टाइम लगता है। स्क्रिप्ट ढूंढ के किरदार में घुसकर उस किरदार को एस्पिरेशनल बनाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। वैसे टाइप के स्टोरी टेलर्स हमें चाहिए जो हमारे हुनर को बाहर ले आ पाएँ, हमारे डांसिंग स्किल्स ही नहीं बल्कि एक्टिंग और कैरेक्टर स्किल्स जो लेके आए। तो ऐसे नए जब फिल्म मेकर्स आते हैं तो उनको ढूंढ कर जाकर उनके पैर पर पड़ के अपने लिए कहानी लिखवाना बहुत टाइम लगता है। तो ज़्यादातर मैं न्यू डायरेक्टर्स के साथ बहुत सक्सेसफुल रहा हूँ बिकॉज उनको मैं मोल्ड कर पाता हूँ, पर उस पर वक्त लग जाता है। काश मैं साल में 3 फिल्म कर पाता तो नथिंग लाइक इट, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड दैट काइंड ऑफ कंटेंट फॉर मी। बहुत सारे ऐसे थिएटर्स बंद हो रहे हैं जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर वो नहीं है जो आज के ज़माने पे आप एक्सपेक्ट कर सको। देखिए, थिएटर पे जाना आजकल, एक ज़माने में लोग बस टैक्सी पकड़ के चले जाते थे, आजकल सबके पास गाड़ियाँ हैं, सबके पास 2 व्हीलर्स हैं। तो ऐसे थिएटर में जहाँ पे आपको ढंग से पार्किंग नहीं मिलता हो या एक्सेसिबिलिटी ठीक नहीं हो, ये थिएटर भी बंद हो रहे हैं। और ये इसलिए नहीं बंद हो रहे कि सिर्फ पिक्चर नहीं चल रही है, इसलिए बंद हो रहे हैं क्योंकि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। सो जैसे ये थिएटर्स बंद होंगे वैसे नए वाले विथ नया इंफ्रास्ट्रक्चर भी खुलेंगे जहाँ पे ज़्यादा स्क्रीन्स होंगे और जहाँ पे पब्लिक के लिए थिएटर पर जाकर पिक्चर देखना एक चोर नहीं होगा। पिक्चर 1.5 घंटे का है और आपका 4.5 घंटे लगते हैं अंदर घुस के बाहर निकल के गाड़ी पार करके पैसा टोकन दे के बाहर निकलने में, तो फिर वो जाहिर है कि लोग उतना तकलीफ नहीं लेना चाहते। तो वी हैव टू मेक दैट प्रोसेस ऑल्सो वेरी स्मूथ। तो इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंज होते ही मुझे लगता है कि बहुत फ़र्क पड़ेगा। Sir, since you said that you have been working on Rocketry for 6 years, and that's a character you just do not play, but you have been involved immensely in the making. Since you have tasted success as a director now, do you feel that the actor and the director in you often come in conflict, in your subsequent projects where you are the actor? It's a good question. As an actor, when you go onto the set, you want to keep the director away, and I don't have much experience directing before this, so this was just a learn as you go process for me for Rocketry. So when I go to the set, I'm just looking forward to being freely just an actor, getting into the character and knowing when I'm done with my job and go back home and feel good about finishing my job that day. So the conflict, I will not let that conflict happen. I'm sure it will happen. Even when I did Decoupled after Rocketry, I was very tempted to suggest a few things, but then I keep my mouth shut and control myself, and that's the only way to do a film because there can only be one director on the set, so you don't want to add to the confusion. मुझे देखिए, ये हमारे लिए एज एक्टर्स ये हमारे लिए एक अकम्पलिशमेंट है। हम किरदार बन के सामने आते हैं। इट हैज़ नो रिफ्लेक्शन ऑफ आवर एक्चुअल स्टैंडिंग इन सोसाइटी। दूसरी बात यह है कि ये बहुत सारा प्रेशर हम पे डाला जा रहा है, मेरे और मेरे बेटे पे। उतने भी हम लोग अकम्पलिश नहीं है, बहुत दूर जाना है अभी, खास करके वेदांत को। सो ये एक ट्रैप है, सो हम इससे दूर रहना चाहते हैं थोड़ी देर के लिए। In the times when most big Hindi films have not done well, you are a bunch where your Hindi films have done well. Rocketry did really well. Bhul Bhulaiya did very well. For Darshan, even the Kashmir Files did very well. So what do you think is not working in other Hindi films, and what was in your film that really worked? Maddie Amir's film was, people kept waiting for it, but it didn't work. Why do you think? What's going wrong? If we knew, we will all be making 8 films, honestly. It's not, anybody doesn't start off thinking that we're making a wrong film.
The intent and the hard work behind it is just as intense with every film that either works or doesn't. So all the films, the big films that I have released, they were all, the intent was to make a good film and make it work. I think the only big difference is that I was lucky because mine's a biopic, so it's not time agnostic. So it would have worked in any time, irrespective of whether it was pre-COVID or post-COVID or anything. But other films which have come after COVID, you're playing to a completely changed audience, highly educated, highly exposed audience to world cinema and stuff. So they're going to judge you with that sort of a yardstick. So it's nobody's fault. I think it's going to take a little time for all of us to pull up our socks and then make screenplay that will work very soon in theaters. Maddie sir, two things. Firstly, huge congratulations for your Nambi effect with Maddie Touch and with Vedant's tremendous success, sir. It's such a proud feeling, in fact. And about the trailer, sir, as I told you, it's really interesting. What is round D corner? Is it delusion? What is that? You know, as Khushali was saying, half my confidence in the project came because Khushali and I were supposed to do some other film together. We spent a lot of times on that script. Somehow it didn't work out. But I was very blown by the fact that she was not interested in doing... See, at that time, this is before COVID, at that time it was so easy for her to get launched in the best manner possible with the best songs and the choreographers and, showing her in the best light. But she was not interested in that. She was really looking for character-driven roles that she wanted to invest time getting into character and stuff. For me, that was a big tick point for me. Like that for me, I said, if somebody is that keen on the script and the story working first, then and be having the ability to have any film she wants greenlit. I'm sorry, now I know how difficult it is for her. Second thing is, for actors who are seniors like us, when we go on to the set nights, हम लोग सोचते हैं कि भाई अपने आप को किस लेवल पे हम पिच करें ताकि सबकी एक्टिंग एक लेवल पे लगे. कभी-कभी हमको दूध भात देना पड़ता है कि भाई ये लेवल पे कर ले, ऐसा नहीं कि तूने बहुत अच्छा काम कर लिया और पिक्चर नहीं चली. You have to make sure that it is very constant in terms of performance. The best part is in this film, मेरे को दूध भात देने की ज़रूरत नहीं पड़ी. I had to just do my job as good as I can because everybody out there was prepared, was getting into character, was on time. We never, when you go to the set, you never have to wait for an actor, despite having so many actors. That's a great sign that everybody is making the same film. And one of the things that as filmmakers and actors and producers we look for is कि क्या सभी की नियत फिल्म बनाने का एक ही है. अगर वो हो जाता है same ना, then there's no pain in making the film. The last thing I want to say is Kushali se koi pooch raha tha ki are you going to feel really nervous about your release on the first day? I said wait for the publicity and the promotion to get over. आप इतने थक जाओगे by the end of the thing कि when the film comes to release आप बोलेंगे just release it हाँ छुटकारा दो मुझे. Nervousness के लिए कोई जगह नहीं रहेगा. But I think for this film it's going to be a matter of great pride for all of us. Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.